Hello students, we are continuing MCQs based on case scenario. This case scenario is based on a level beta. So let us see this scenario. So in this case, data given is PQ Limited is a information technology company dealing in laptops and printers. It has two divisions, laptop division and printer division. Equity of PQ Limited is rupees 400 crores and debt is rupees 200 crores. So laptop division segment value is attributable to 40%, which has an asset beta of 1.20, and balance value is attributable to printers division, which has an asset beta of 1.50. So PQ Limited has a debt beta of 0.24. So we have to calculate our different MCQs हैं आपके. Number 1, calculate asset beta of PQ Limited. Then second, we have to calculate equity beta of PQ Limited. Then we have number third case. तो लेट अस स्टार्ट. सो पहले देखते हैं डाटा आपको देखो मेंशन किया है. दिस इज PQ Limited. So its total capital structure is given. So and equity and debt. So it has equity ऑफ रुपीज 400 करोड़ से. रुपीज आपको मेंशन किए हैं करोड़ में. एंड इट आल्सो हैज डेट ऑफ 200 करोड़. सो टोटल कैपिटल इज 600 which is also our total assets of this PQ Limited. Now this company has two divisions. One is laptop division and the second is printer division. Given that, so how much percent of assets are attributable to laptop division? This is 40% assets. So 40% of assets belong to laptop division. It means balance 60% of assets belong to printer division. So then you are given that the asset beta is given. इट मीन्स these are two divisions और segments है, तो उनका बीटा आपको मेंशन किया है विच इज अवर एसेट बीटा of laptop division. This is 1.2 and of printer division is 1.5. And the overall company has debt also which is 200 and debt beta is also given. So beta of debt is presently 0.24. So first of all, number 1 MCQ they are asking calculate asset beta of P2 Limited. So first MCQ. So we have to calculate our asset beta of PQ Limited, and this is also called our unlevered beta. तो asset beta means अब आपके दो segments हैं उनका different beta है, तो this will be weighted beta. This is weighted beta of assets of two segments, or we can also say like two divisions, which is also called segment beta is given. So what will be formula for this? You take asset beta of laptop division 1.20. Then you see what percent of assets are held by laptop division 40%. So you take 40% of this plus beta of printer division 1.5 and it has assets of 60%. So this is 0.248 plus 0.9. So total asset beta of whole PQ Limited it will become 1.38. So this is called asset beta of PQ Limited. Then you can say which option is correct. So answer is option number B. So answer is option B. So next we have second MCQ. In this they are asking calculate equity beta of PQ Limited. अब देखते हैं पूरी कंपनी का इक्विटी beta कितना है. This is MCQ number second. Now company has equity also, debt also. Debt का beta आपको already mention किया है. So what is the formula of this? We also know that asset beta is weighted average beta of total capital of company. तो पहले हमने ये एसेट साइड से स्टार्ट किया तो उससे एसेट बीटा आ गया. अब आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए एसेट बीटा इक्वल टू टोटल बीटा ऑफ कैपिटल. इट मीन्स एसेट बीटा इज आल्सो इक्वल टू वेटेड एवरेज बीटा ऑफ टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल में अब डेट भी है इक्विटी भी है. सो फार्मूला विल बिकम बीटा ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी. डेट बीटा आपको मेंशन किया है, इक्विटी बीटा आपका कैलकुलेट हो जाएगा. सो एसेट बीटा इज 1.38
So cash beta is 0.24. Vacancy 200 upon 600 plus equity beta is missing. Vehicle equity is 400 upon 600. This is 1.38. This is 200 upon 600 is 1/3. So 1/3 is becoming 0.08. So plus equity beta. And this vehicle is coming 2/3. So it means equity beta is equal to, so you can see 1.38 minus 0.08, 1.3 cross multiply into 3/2. So this is coming 3.9 divided by 2. So 1.95 is our equity beta. And this is also called as levered beta. Now you can see which option is correct. Answer is option number A. So next we have MCQ number 3. In this they are asking, calculate revised equity beta if P2 Limited decides to change its debt equity position by raising further debt and buying back equity to have its debt equity ratio of 1.5. अब कंपनी ने कुछ डेट रेज करना है और इक्विटी को बायबैक करना है, सो दैट डेट इक्विटी रेशियो बिकम्स 1.5 and any further funds raised by way of debt will have a beta of 0.42. तो इट मीन सबसे पहले आप देखिए, आपको टोटल कैपिटल को दिया ही है 600, किसी के ₹600 करोड़, और आपको मेंशन किया है टारगेट डेट इक्विटी रेशियो दिस शुड बी 1.25. So it means debt will be 1.5, so equity is equal to 1. So total capital will be 2.25. तो इसके बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट शुड बी अवर टोटल टारगेट डेट. अब आपका टोटल डेट कितना होना चाहिए? सो टोटल कैपिटल इज 600, इफ टोटल इज 2.5, देन डेट इज हाउ मच? 1.25. तो इससे आपका टारगेट डेट आ जाएगा. So this is 600 into 1.5 divided by 2.25. किसी की 360 और आपका प्रेजेंट डेट है 200, तो वो आप माइनस कीजिए. इट मीन्स बैलेंस इज अवर न्यू डेट जो आपको रेज करना है. तो न्यू डेट इज रेज्ड बाय 160 एंड व्हाट विल बी नाउ टोटल इक्विटी आफ्टर बायबैक. तो टोटल कैपिटल इज 600 और उसमें से आप माइनस कर दीजिए, डेट होगा आपका 360. इट मीन बैलेंस इज इक्विटी. तो मीन्स अब आपके पास जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें प्रेजेंट डेट है 200, न्यू डेट 160 एंड इक्विटी इज 240. अब जो न्यू डेट है उसका बीटा भी आपको दिया है, बीटा ऑफ न्यू डेट. सो दिस विल बिकम 0.42 और आपको प्रेजेंट बीटा पहले ही दे रखा है 0.24. So now we can calculate what will be revised equity beta. So apply formula asset beta is equal to beta of debt into weight of debt plus beta of equity into weight of equity. asset beta आपका सेम ही रहेगा which we have already calculated 1.38. beta आपके दो हैं, नंबर 1 0.24, उसका देखिए कितना वेट है. तो वेट ऑफ प्रेजेंट डेट इज 200 in total capital is 600 plus beta of new debt 0.42. then we say what is weight? New debt is 160 in total capital is 600 plus equity beta. What is the weight of equity? 240 is equity, total capital is 600. 600 आपका LCM आ जाएगा. so this will be cross multiplied. so this is 1.38 into 600. This is 828. 200 into 0.24. इसको ट्रांसफर कर रखे हैं लेफ्ट साइड में और फर्स्ट लेटर्स राइट हेयर. so 200 into 0.24. This is 48. 160 into 0.42. This is 67.2 plus 240 into beta of equity. So now we can solve. You will get equity beta. So equity beta is equal to 828 minus 48 minus 67.2 divided by 240. So this will be our revised equity beta. So 828 minus 48 minus 67.2 divided by 240.
This is coming 2.97. This will be revised equity beta. So now you can see which option is correct. So option number C is correct. So answer is option number C. So in this lecture we discussed a case scenario based on a Lieberg beta. फर्दर टॉपिक वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।